Masihi ki, praise the Lord. Welcome to Worship Over a Coffee, episode 5. Getting blessed. God is not biased, right? Salvation and salvation हिंदी में उद्धार, जिसके बारे में देखते हैं कि salvation होता क्या है, उसकी definition क्या है और अलग अलग religions. main criteria of God is to seek the lost, a lost person who is lost in the world, जो पास safe. He want to keep us safe in His arms. हम इस संसार में है तो भी वो हमको चाहता है कि because the gospel, because the power of God that brings salvation to everyone. प्रेम में लेके आ जाइए, उस प्रेम में, उस विश्वास में लेके आ जाइए. मेरे पाप को दूर करिए ताकि मैं आप में बना रहूं. शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम. Jai Masihi ki, praise the Lord. Welcome to Worship Over a Coffee, episode 5. I'm actually very excited that we Yeah. have reached episode 5. What do you feel? I feel amazing that we could able to do something like this. We are talking about worship. We are also talking about the word according to that we are worshiping, taking some songs. So And it is coffee. unique. Yeah, it's unique. You know, coffee is a sign of conversation. Yeah. So we can, मतलब हम गाना गा सकते हैं, हम preach भी कर सकते हैं, but बात करना, you know, what we are doing is unique. That's true. Even our faith also requires consistency. Definitely. That's why we choose some of the topic which is relevant to life. Yeah. So when we talk about these things, it is all about edification of our soul, life. If something God is giving us, this whole universe is getting blessed. God is not biased, right? So we have to talk about it. Like if I take one song for जिंदगी से relate करना चाहिए, तभी तो एक fruit आएगा ना. So that's why I'm so glad कि हम ये कुछ करने वाले हैं. So talking about fruit and the things that we discuss, what is the topic today? What do you think we are going to talk about? So the topic today is salvation and salvation हिंदी में उद्धार, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. And what exactly it is talking about, we'll just have some, you know, minutes, some precise time. बहुत आप ठहरिए और सुनिए इसको आगे तक, ताकि आपको ये एनालिसिस, ये चीज़ें आपको समझ पे आए. When we worship, we can take this thing as a takeaway for our lives. I guess, yeah, मतलब as we are going up the ladder, we started from, you know, hope story, then we were talking about a faith, then we are now to the salvation. और salvation, being an Indian, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं देखता हूँ अपनी सभ्यता में, अपने इतिहास को उठाकर अगर देखूँ तो salvation, मोक्ष, ये निर्वाणा, उद्धार, ये एक बहुत प्राइम टॉपिक रहा है एक इंसान की जिंदगी में. हॉट टॉपिक रहा है इंसान की जिंदगी में कि आगे क्या मेरी जिंदगी निर्वाणा की ओर जा रही है. हम लोग पुराने राजाओं के समय से लेके अब तक हर बार हम लोग ये देखते हैं कि इससे छुटकारा कैसे पाए. ये जिंदगी की सारी ये तकलीफें, ये सारी प्रॉब्लम्स, मोहमाया, ये सबसे तकलीफ से हम छूटें कैसे. You know, that is what every man is just fighting against. Salvation is one of the things that, you know, we Indians also, and all over the world also, but we are Indians, so we can only talk about Indians. But we have to very much look into it, like what are the, you know, different faith talk about differently, you know, on salvation. So let's go under. हम एक बार जाके हम लोग देखते हैं कि salvation होता क्या है, उसकी definition क्या है, और अलग अलग religions और अलग अलग faith उसके बारे में कहती क्या है. तो अगर हम शुरुआत करें, उसका definition है a way of being saved from danger, loss or harm. एक तरीका, एक ऐसा रास्ता जिससे हम अपने नुकसान से या फिर किसी लॉस से, किसी हार्म से हम बच सकते हैं. और अगर हम उसको हम थोड़ा और रिसर्च करें, अगर हम बाकी रिलीजन्स के बारे में समझने से पहले हम जाने कि फेथ और सैल्वेशन कैसे जाता है या फिर सैल्वेशन कैसे, कॉन्सेप्ट ऑफ सैल्वेशन क्या है, तो हम देख सकते हैं, यू नो, ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन टॉक्स अबाउट अटेनिंग सैल्वेशन इन द एंड ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी. यू नो, दे टॉक अबाउट कि इवन हिंदुइज्म ऑल्सो टॉक्स अबाउट, यू नो, मोक्ष कैन बी achieved even after death. So that is the, you know, it's a factor that can be achieved even after death, and specifically end of the journey बोलते हैं उसे. और they have confirmed कि हर चीज़ इसको एक लाइफ साइकिल होती है, लाइफ
और डेथ की जो साइकिल है, उस साइकिल से बाहर निकलने को हम सैल्वेशन कहते हैं। ये बेसिक आइडिया मिला है मुझे कि जब मैंने रिसर्च करा कि रिलीजन्स वगैरह क्या आते हैं, तो उसका एक समरी अगर बनाए हम, तो हम ये समझ पाते हैं कि लाइफ और डेथ की जो साइकिल है, जो गुत्थी है, उससे बाहर निकलने को सैल्वेशन या उद्धार कहते हैं। तो सैल्वेशन हमने जैसे देखा कि डेथ एक इनएविटेबल चीज़ है, हम उसको हटा नहीं सकते। तो everyone wants it, everyone has it also. So लाइफ एंड डेथ, इसकी साइकिल से बाहर निकलने को सैल्वेशन हम देखते हैं। अगर हम अलग अलग रिलीजन देखें, मैंने 4 मेजर रिलीजन में थोड़ा सा मैंने पढ़ा, उसके बारे में जाना कि सैल्वेशन वो क्या कहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम बुद्धिज्म considers ignorance instead of sin as the roadblock to salvation and believes that salvation, that is nirvana, is the extinguishing of the fires owing to which there is suffering. There are 3 fires they plan, कि वो 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम छोड़ देते हैं तो हम salvation यानी निर्वाणा हम पा सकते हैं। वो 3 चीज़ें हैं, द्वेषा यानी aversion, और दूसरी चीज़ है attachment जो है रागा, तीसरी है ignorance अविद्या और मोह। इन 3 चीज़ों से अगर हम कुछ निकल जाते हैं बाहर, और इसके कुछ 8 तरीके हैं, जो 8 सच्चाइयाँ हमें जाननी पड़ती हैं, उसके बाद हम लोग निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगर हिंदुइज्म में बात करें, हिंदुइज्म का सैल्वेशन का एक क्लियर मीनिंग है मोक्ष। जो मोक्ष होता है वो लाइफ साइकिल, डेथ की साइकिल से बाहर निकलने को, जैसे मैंने बोला प्राइमली, उसको बोलते हैं सैल्वेशन इन जनरल। Yes, that's in general, you know, because they say कि जो डेथ है वो एक मिस्ट्री है, बर्थ एक गिफ्ट है। उन सब के दोनों से बाहर निकल के भगवान से जुड़ जाना, ऊपर वाले से जुड़ जाना, उसको हम मोक्ष कहते हैं। अगर हम इस्लाम में देखें, इस्लाम क्लियरली कहता है कि आपके जो फास्टिंग, प्रेयर से और डिवोशन से, आपकी खुदा की और जो आपकी भक्ति है, उससे आप मोक्ष पा सकते हैं। एंड क्रिश्चियनिटी कहता है कि जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करके कि हम लोग सबको सिन और पाप के चंगुल में फंसे हुए थे, हमें यीशु मसीह ने, जीसस क्राइस्ट ने अपनी जान दी, और उस पर अगर विश्वास करते हैं और उसके हाथों में अपने जीवन देते हैं, तो हम सैल्वेशन को पा सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो इसमें बेसिकली एवरीथिंग वाज ईदर, या तो आप खुद ऐसा कुछ करें, या तो आपके खुद के कर्म ऐसे हों, या तो फिर आपकी खुद की भक्ति ऐसी हो, या तो फिर आप चीज़ों को कट ऑफ करें। यानी हम ये बताती है सैल्वेशन की, शायद से हमें सैल्वेशन इस दुनिया में प्राप्त होने के चांसेस थोड़े से कम लगते हैं, if you talk about the religions and the faith, different faith. So I want to know, what does the Bible talk about it? So that's a wonderful research, bro, and I'm so glad that we could have an analysis. It's just a general analysis for your knowledge. We are not giving any of the contradiction. यहाँ किसी contradiction पे बात नहीं हो रही है. It's just general view जो हम बात कर रहे हैं salvation के ऊपर. Since it is a limited time frame in which we have to take out certain things and give it away. Bible. When I was in search of salvation, when I was looking for salvation for my life, I was thinking how well it can affect me. How as a young person, as a new believer, as a person जिसकी लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं है, ज़िंदगियाँ ख़राब चल रही हैं, सब ऊंचा नीचा चल रहा है, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को बदलूं, कैसे मैं अपने आप को मतलब उस लेवल पे पहुंचाऊं जहाँ पे अभी भी लोग गलत दिशा में जा रहे हैं. When I started researching about it, what I came across with something in the Bible. बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, उसमें कई चीज़ों के सवाल भी हैं और जवाब भी हैं. सो दिस इज़ द क्वेश्चन विच आई टुक इट टू द बाइबल, केविन, एंड आई रियलाइज्ड आई वाज सो मच कन्विंस्ड. Okay, so I will tell what Bible talks about and what biblical salvation, not Bible talking about straight away, what biblical salvation is all about. So I'll read it for you. In easy words, God has freely offered us life in Jesus Christ. Okay, simple. Jesus came down, He went on the cross, and that's how we got forgiveness. और इससे हमें समझ में आता है कि हमारा उद्धार हो गया, हमारे पापों की क्षमा उसने हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ और उसने हमारे लिए सब कुछ सह लिया. So हमें कुछ नहीं करना. Like, are you talking about? But that's what I'm saying. But understanding the exact process in which the life become, available to us, how this life becomes available in this world, in this carnal world, मतलब जहाँ पे पाप हैं, दुष्शक्तियाँ हैं, व्यभिचार है, गंदी बातें हैं, डिप्रेशन है, पेन है, sorrow है. It is sometimes difficult. We are so caught up in this, and I love this topic, because I'm convinced and I'm saved by this topic. So therefore God painted
painted various pictures of salvation in Bible. So Bible is a book of analysis as well as stories. Analysis भी दिया है उसमें और stories भी दी हैं, कहानियाँ भी दी गई हैं जो सच्ची घटनाओं पे आधारित है. एक story जो salvation की है, एक story जो न्यू टेस्टामेंट में है, उसमें जक्कई नाम एक आदमी था. Zacchaeus was a person. वो यीशु को देखना चाहता था. He was so eager to see God. Okay, sometimes that's what the world is seeking towards. हम perfection की ओर आ जाएं, हम सिद्ध बन जाएं, हम मोक्ष प्राप्त कर लें. So that was one guy. एक story है जो वो, जैसे मैंने आपको कहा कि यीशु मसीह में उद्धार है, तो वो यीशु मसीह को देखना चाहता था. यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है. और एक story जैसे जक्कई की स्टोरी है, लूक 19 verses 1 to 10. I will not read the whole passage. I'll just read verse 9. The eagerness has led him to salvation. कह लीजिए, वो यीशु को देखना चाहता था. आप पूरी स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो लूक 19 पढ़िएगा. बट हुआ क्या, रिजल्ट क्या मिला ज़ाकियस को? He wanted to see Jesus, and what was the result? Kevin, can you read it for me? Yes. So verse 9 and 10 says, Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because this man too is son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. So why God is referring here that this house has received the salvation? Because he was seeking the lost. The main criteria of God is to seek the lost. A lost person who is lost in the world, जो पाप में डूबा है, वो कैसे इन सब चीज़ों में मुक्ति पाएगा, कैसे अपने डिप्रेशन, कैसे अपने पेन, कैसे अपने एंजाइटी, कैसे अपने पापों से, धोखाधड़ी से बाहर आएगा. वो सैल्वेशन है, वही उद्धार है. सो जक्कई की जो स्टोरी है वो मुझे बहुत प्रभावित करती है. उसने इतना बढ़िया अपने आप को सरेंडर किया. उसने बोला कि मैंने जो लोगों से लिया है ना बुरे तरीके से, उसको भी मैं लौटा दूंगा, और जिसके लिए बोला कि उसको मैं डबल पोर्शन दे दूंगा. जब उसने कन्फेस किया ना, तब प्रभु ने कहा कि इस घर में आज उद्धार है, क्योंकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित है. Okay, so now what Bible talks about salvation in Greek, because the New Testament is written in Greek. So I'll talk about the Greek word of salvation. The Greek word of salvation is soteria, which is the context of Bible about salvation. Listen to me carefully. Bringing safely. Soteria means deliverance, छुटकारा, उनको छुटकारा करके अच्छे से safely अपने पास पहुंचाना, and उनको हर एक पाप से, हर एक हार्म से दूर रखना. दैट इज द आइडिया ऑफ गॉड. गॉड इज कीपिंग अस सेफ. ही वांट टू कीप अस सेफ इन हिज आर्म्स. हम इस संसार में है तो भी वो हमको चाहता है कि वो सेफ रखे. सो द की वर्ड्स इज रोमन 1:16. आप अपनी बाइबल्स को निकाल के उसको पढ़ सकते हैं. अगर आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता, यू कैन गूगल इट. रोमन्स 1:16 अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो, राइट. सो रोमन्स 1:16, व्हाट इट सेज? केविन, कैन यू रीड इट फॉर मी? For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Yes. First to Jew and then to Gentile. So this is, salvation is a power of God to bring people to salvation, everyone to salvation, not a single person, not Kevin and I that we are talking, okay, we have received salvation, we yet fall short of the glory of God, we yet feel sometime down, हम खुद पेन और सॉरो से गुजरते हैं. That doesn't mean that हमको मोक्ष या मोक्ष जिसको हम बोलते हैं, but salvation is the right word. Salvation means delivering. उसने हमें छुटकारा दे दिया है. So it's a free will, it is for everyone. First for Jews, where Jesus came itself, and then to Gentile, for all over the world. God is not biased कि मैं उद्धार सिर्फ चुने हुए को दूंगा जो मेरे पास आएगा. It is for everyone. जो कोई आता है. यूहन्ना 3:16 is a beautiful passage. And God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who believe in Him will find eternal life, will have eternal life, will have, eternal peace. And that's what it's talking about. I am not ashamed of the gospel, because the power of God that brings salvation to everyone who believes. And God is not biased. That means God is not biased. True. And that's what I am amazed and I'm blessed that in Old Testament, God has used this phrase save. God is saving in Noah's time. God is saving in Moses' time. सारे जितने राजा है, दाऊद, उसके बाद दानियल, उसके प्रॉफिट, मेजर माइनर प्रॉफिट, सबको प्रभु ने सेव करने के लिए बोला कि लोगों को छुड़ा लाओ. ठीक है. एक आदमी को तो
एक बंदा था जो प्रभु से दूर जा रहा था, उसका नाम था योना। योना को परमेश्वर ने बोला था उस जगह पे नीनवे में जाके लोगों को सेव करना है, यू हैव टू टेल, बट ही वेंट अवे, बट देन गॉड हैज अनदर प्लान। आई विल टेल द स्टोरी लेटर इन दिस, लेटर सम टाइम इन द एपिसोड्स टू कम। बट द न्यू टेस्टामेंट सेज इट इज द वे. Saving is one thing, God is already saving us, He has a criteria to save, but New Testament is the way. God is the way, the truth and the life. If you want to fellowship with God in eternal life, उसके साथ अगर आप संगति करना चाहते हैं, then He is the way. What Matthew 7:14 says, we will go and read it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Only few find it. How? Who comes to the knowing knowledge, who comes on the right track, who comes to know Jesus, कि हाँ प्रभु आपने मेरे लिए पाप में इस मृत्यु से मुझे छुड़ाया है और आज मैं आपसे प्रेम और अधिक प्रेम करता हूँ. And that's what the Bible is talking about. Narrow is the gate. Those who want to enter, you have to come in the right track. See, if I don't talk about right tracking yourself, that means you can't go in the... God is only talking about change your ways. You can wear the same shirt, same pant, same watch, everything same. Only your mind, your heart has to change and come in the right track. God is not telling you to change your name according to the religion and according. My name is Arpit. Nobody can tell I am a Christian. True. Right? Yeah. But name doesn't define your religion or your faith. It is about your heart, your way. That's what the New Testament is talking about. As vulnerable you are, कितने भी बुरे क्यों ना हो, God is giving you salvation, peace from your anxiety, depression, sufferings, you know. This is where God is giving you. Just come on the right way. And what Hebrews says here, 10:20, By the new and living way that He opened for us through the curtain, that is, through His flesh. Jesus has given everything on the cross. He himself wounded himself and given. Through his flesh, he has poured out his blood and shed his blood, and the curtain was torn. आज जब हम आराधना करने जाते हैं, आज जब हम उसकी presence में जाते हैं, when you go into the holies of holies, now that's a point of meeting to God. That's where we worship, no? That's where we please God, and we ask the salvation as we receive it from the Lord. It's worship, and that's what it is relating to. That curtain is torn. अब कोई भेदभाव नहीं है. आप जैसे हो वैसे जा सकते हो. आप नंगे हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास ऐसी बुरी स्थिति है, आप चाहे व्यभिचारी हो, curtain is torn. God has given everything on the cross, and through his flesh, उसके उस मृत्यु से जो उसने क्रूस पर दिया, that's the right way to just go enter this, because the curtain is over. So salvation has one way, two stages and three. One way, two sides and three stages. One way, two sides and three stages. So we will have this thing in our mind that what is one way? Very easy. One way is Jesus. Christ is the way the Father has given to us. Salvation is provided for us by God's grace, which is given to us freely in Jesus, based on death and resurrection, and still He is interceding for us. Death, resurrection and interceding. Who is there in the world who intercede for you and I? लोग अपने हित के बारे में सोचते हैं, बट यीशु मसीह ने हमारे बारे में सोचा. वो हमारे लिए मरा, जी उठा, और आज भी पिता के दाहिने हाथ में जाके हमारे लिए क्या कर रहा है? इंटरसीड कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है. एंड अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, he is still interceding. So only God wants is one way, to believe in Jesus. And then what is that? Romans 3:24, what it says? And all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Through the redemption it came through by Christ Jesus. यीशु मसीह में जो छुटकारा हमें मिला है, उससे हम दूसरे भाग में पहुंचते हैं, which is two ways of salvation, which is grace and faith. So we are not talking anything else. We are talking straight of God wants, and we will
get to know what God is really wanting. So थोड़ी देर में समझ में आने वाला why this all story about salvation, why who is thinking, what you have researched, क्यों हम salvation के बारे में बात करें. So we will get to know what it's saying. Grace and faith. What is the two ways? Grace and faith. Yeah. So salvation is a gift of God's grace received through faith. So I was talking about in the last episode, if you are not seen, you should watch faith. And what it's talking about, it's believing on God and coming in the right track and connecting to salvation. I'm saying faith in Jesus Christ. This is what we are talking about. Salvation we get through God by His grace and received by the thought by and through us through the response of faith. जो हम अपने faith में जो उसको response करते हैं वो हमें उद्धार की ओर लेके जाती है. All it takes is your faith in your heart. What it takes, it is a free will, but it takes your faith, what you believe in your heart. So that's why we are talking in this worship over a coffee, this episode, that you require one thing: have faith on God, and then you will ultimately go to the third stage, which is 3 stages of salvation, which is justification. Can you read it? Justification, what it says? And okay, the verse? No. Has been saved from the guilt of sin. From the guilt of sin. Justification from the sin. We live in this world. We have to be with God. We fellowship with the Lord. We find release from our guilt. Youth is struggling with guilt, Kevin. And वो कैसे निकल पाएगा? Because you are justified. Your gender is justified. Your thinking is justified. आपको न्याय मिला है परमेश्वर में. This is a part of salvation. What Ephesians 2:8 says. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God. Wow. It is a gift from God. Salvation is the gift from God. It's not from yourself. कि आप अपनी अप्रोच लगाते रहो, मैं धतकर्म करता रहूँ, बस ये करूँगा, मैं तो बस पालूँगा अपने हाथों से उस salvation को. You can't do it. It's a gift from God. Salvation is a gift from God. That's how we are justified. God is not telling you to do everything. God is not asking you to give offering. ये चढ़ाओ, वो कर दो, ये कर दो. Nothing. It is a gift. You freely get it because you're free from your guilt. And then what it leads to? Sanctification. Sanctification is पवित्रीकरण या शुद्धिकरण. क्या कह रहा है? Is being saved from the power of sin. Power of sin. Sin has power in your life. It can mold you. If you get addicted to a sin, it can lead you anywhere. अगर आपके अंदर कोई सिगरेट पीने का एडिक्शन है, दारू पीने का एडिक्शन है, या कोई भी ऐसा गलत काम है, it will run you, it will run you. मैं बोलना चाहता हूँ बहुत सी चीज़ें, but I will share one thing from my life. When I used to smoke, when I used to, सारे नशे करता था मैं. So this, the power of sin was running. I was not sanctified. It was running. So मेरे को लत लगती थी तो मैं सिगरेट की दुकान पे जाके सिगरेट पीने लगता था. मुझे कुछ होता था. So I was run by the sin. I was away from the salvation. What Corinthians is saying, it was a convincing thing for me. That it was something which I ignored all through my life. What is it saying? 1 Corinthians 1:8. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. It is the power of God. I was foolish, I was not recognizing what Jesus did on the cross. And then when I got to know God, God glorified me. God brought me to His close. उसने महिमान्वित किया मुझे. What Acts 15:11 says? We believe that we are all saved the same way by the undeserved grace of the Lord Jesus. Undeserved grace of Lord Jesus. I was not deserving. Neither Kevin was deserving. But yet God loved us the way we are. So same for you guys, that if you want to get close to God, come to the salvation. I'll pray with you a salvation prayer. If you are there, you can close your eyes and say, Lord, bring me to the saving knowledge of you. You can say right now, मुझे अपने उस अनुग्रह में लेके आ जाइए, उस प्रेम में, उस विश्वास में लेके आ जाइए. मेरे पाप को दूर करिए ताकि मैं आप में बना रहूं. And God will deliver you right away.
because He is there with you. He will give you salvation. So if you have not yet received it, God will bless you. And if you want to talk to us, just call on the number which are given on the description, so that it is not an easy thing. We are there for you. Kevin and I can pray for you. We can share hearts with you, and you will find salvation in Jesus' name. Kevin. I believe it was an eye-opening thing that you said, and I would like to thank him first of all, because I don't know आपने शायद से definition पढ़ा या नहीं उससे पहले जब आप prepare कर रहे थे, but the definition clearly said it is the way by you keep yourself safe, or you get saved by the harm and everything, and both of the things that you said, even in the Old Testament was talking about save, and in the New Testament was talking the way. So I guess even the Bible clarifies and justifies the definition of salvation. I did not search it in the Bible. The definition was given in the Google Cambridge website. So I can get that even the definition clarifies that this is not our effort. Yeah. जो तीन stages पढ़ी उसमें पता लगा कि it is not by ourselves. It was undeserving. We were undeserving, and all of that. But in middle of all of it, like where we are, whatever we are, however we are, we can still receive. ये बात तो क्लियर हो गई कि even in this carnal world, इस दुनिया में रहकर मुझे उद्धार मिल सकता है. Yes. That is the summary that I can get from your preaching. Wonderful. So one thing which we can do if you want to come to the knowing knowledge of God is to be in His presence, because the curtain is torn, and through His flesh you can just give God glory. And we will sing one song with you of salvation in Jesus' name. It's a wonderful song. We will have this time that God will bless us through salvation in this process, that we may understand in His presence. Let's come running and say, Lord. Yeshua, 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 Yeshua. मेरे पीछे बोले उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम. Sing with us. उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम. भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम. उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम. उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम. Yes, Lord. Thank you for this song, Lord, that we have faith in you, that we receive by faith whatever we have in our lives, Lord. We have faith in you for what you are doing for us, Lord Father. In days to come, Lord, you will give us salvation. Right now, you give us salvation, Lord Father. Our lives may be transformed, Lord. हमारे जीवन बदलने पाए प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है. इस गीत को, इस पूरे वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं. यीशु के नाम से मांगता हूँ. Amen. Amen. Such a nice time, Kevin, we had, right? And talking about salvation, talking about our lives, we'll have salvation part 2. And we will share our testimonies in this next episode, so that God may know how God has worked through in our lives, of what क्या क्या हमारे जीवनों में हुआ, उतार चढ़ाव,
और उद्धार के अनुभव को हम बता पाएंगे आपको. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. इन डेज टू कम वी विल हैव गुड टाइम रिसीविंग फ्रॉम द लॉर्ड व्हाट गॉड हैज डन इन लाइफ, सो दैट आपके जीवन भी बदलने पाए. शेयर करिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग ब्लेस होने पाए. राइट केविन, हाउ पीपल कैन कनेक्ट टू अस? Yes, first of all, if you're watching on Instagram, if you're watching on YouTube, subscribe the channel, click on the bell icon, just for you to get to know कि अगला एपिसोड या फिर अगला वीडियो कब आ रहा है. You know, there is going to be greater surprises in your way. Yeah. You know, you just wait and watch. But if you want to connect to us, if you want to text us, if you want to know if you're blessed and everything, if you want to share your testimonies, connect with us. You know, the WhatsApp number is given. But at the same time, you can connect to us on social media, Facebook and Instagram. You can search United Worshippers and you can really, you know, DM us or message us and we'll connect with you. So, and as I shared in earlier episode also, कि अगर आपकी टेस्टिमनी है और आप चाहते हैं कि हम आपसे कनेक्ट हों, आपकी टेस्टिमनी को फीचर करें यहाँ पे, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं so that we can share what God is doing in your life. And for your surprise, we will be having from next week, we will be having special guests with us on the show. So stay tuned, and we are so blessed that the people which are going to come are amazing men and women of God. God has done something amazing and various things in their life. उनका अद्भुत काम परमेश्वर ने जीवनों में किया है. So thank you for tuning in. Do subscribe and share and like the video so that we can connect with you always and we can share more things with you and people can be blessed. When you're sharing this one video, make sure that life is changed. Prayerfully share this so that they may find eternity, peace from all the sorrow and suffering in their life. God bless you. See you next Saturday at 6 p.m. Take care. God bless you.